Assalamu alaikum. So student, today we are going to solve the past paper question of the topic moment or turning effect of force. So we have this first question. From the year 13, paper 2-1, question number 2. Figure shows the apparatus used to investigate the turning effect of a force. The uniform meter rule is freely pivoted at its center. Newton meter is 20 centimeter from the pivot and 4 Newton weight is 40 centimeter from the pivot. State the principle of moment for a body in equilibrium. अब एक नंबर के लिए क्वेश्चन है, एक नंबर के लिए आप सिंपली लिख सकते हैं फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम शॉर्ट में लिख रहा हूं, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट is equal to sum of anti-clockwise moment. For a body in equilibrium, sum of clockwise moment is equal to sum of anti-clockwise moment. Calculate the reading. पार्ट बी हमारे पास, कैलकुलेट द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर. रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर का मतलब क्या है? न्यूटन मीटर जो है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, ठीक है. लेट सपोज दिस फोर्स इज एफ. तो हमने ये फोर्स एफ मालूम करनी है, दैट इनेबल द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब यहाँ पे टोटल दो फोर्सेस लग रही हैं. वन फोर्स इज द वेट ऑफ दिस ब्लॉक which is given 4 Newton, and the other force F is required. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाएंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखिए, रिमेंबर सारे डिस्टेंस कहाँ से लेने हैं? पिवट से. अब ये जो फोर्स है 4 न्यूटन की, ये वाली, इसका डिस्टेंस पिवट से कितना है? 40 सेंटीमीटर. सो फोर्स कितनी है? 4 न्यूटन, डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर. वेट अ मिनट, लेट मी रिमूव दिस वन. So 4 Newton multiplied by 40 centimeter anti-clockwise moment is equal to clockwise moment. दूसरे फोर्स कौन सी? F है, और उसका डिस्टेंस पिवट से कितना है? फिर कह रहा हूँ सारे डिस्टेंस कहाँ से लेने? पिवट से, 20 सेंटीमीटर. सो F के लिए सॉल्व करेंगे. 4 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड डिवाइडेड बाय 20. लेट मी डू दैट. लेट मी गेट माय कैलकुलेटर. सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4 multiplied by 40 is 160 and divided by 20. So आंसर आ गया हमारे पास 8. टू सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखिएगा 8.0 न्यूटन. न्यूटन मीटर है तो रीडिंग क्या मेजर करेगा? फोर्स मेजर करेगा न्यूटन में. Okay, the weight of the meter rule is 1.2 Newton. Calculate the size of the force exerted on the meter rule by the pivot. अच्छा, इक्विलिब्रियम की दो स्टेट होती है हमारे पास. एक स्टेट तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट वी हैव अप्लाइड. दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जितनी फोर्स डाउनवर्ड होगी उतनी फोर्स अपवर्ड होगी. सो सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो. जब हम कहेंगे सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो, उसका मतलब क्या है कि सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स एंड सम ऑफ राइटवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द लेफ्टवर्ड फोर्स एंड सो ऑन. सो इस केस में अगर आप देखें तो टोटल जो अपवर्ड फोर्स लग रही है, वी जस्ट हैव फाउंड इट आउट, दैट इज 8 न्यूटन. 8 न्यूटन फोर्स लग रही है कहाँ पे? ऊपर की तरफ लग रही है. जबकि डाउनवर्ड कौन कौन सी फोर्स लग रही हैं? एक है मीटर रूल का अपना वेट 1.2 न्यूटन. वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करता है, दैट इज 1.2 न्यूटन एक्टिंग फ्रॉम एयर. और दूसरी फोर्स 4 न्यूटन की डाउनवर्ड एक्ट कर रही है. तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो एक्ट कर रही है दैट इज 4 प्लस 1.2 विच इज इक्वल टू
5.2 न्यूटन और अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है 8 न्यूटन. फोर्सेस आर नॉट बैलेंस अपेरेंटली. कितना डिफरेंस आ रहा है 8 माइनस 5.2. 8 माइनस 5.2 करेंगे दैट इज 2.8 न्यूटन. इसका मतलब है कि सारी फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए हमें फर्दर कितनी फोर्स की जरूरत है 2.8 न्यूटन विच विल बी अप्लाइड बाय द पिवट डाउनवर्ड. एंड दैट इज अवर आंसर. एक दफा और सुन लें. हाँ, क्वेश्चन था हमारे पास कि द वेट ऑफ द मीटर रूल इज 1.2 न्यूटन. कैलकुलेट द साइज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मीटर रूल बाय द पिवट. तो मीटर रूल पिवट पे कितनी फोर्स लगाएगा? मीटर रूल पिवट पे इतनी फोर्स लगाएगा कि सिस्टम बैलेंस में रहे, क्योंकि बैलेंस होने के लिए टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. अब टोटल अपवर्ड फोर्स थी 8 न्यूटन, टोटल डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास आ रही थी 4 न्यूटन एंड मीटर रूल का जो वेट था 1.2 न्यूटन. डिफरेंस था हमारे पास, डिफरेंट मालूम कर लिया 2.8 न्यूटन. एंड दिस फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द पिवट ऑन द मीटर रूल डाउनवर्ड. सो आंसर हमारे पास क्या आ गया 2.8 न्यूटन. दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पिवट ऑन द मीटर रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमारे पास. एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द मोमेंट ऑफ अ फोर्स. व्हाट इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स? इट इज the product of force and perpendicular distance between force and pivot or between line of action of force and pivot. Both are correct. Okay. Man pulls on the rope with a horizontal force T. This is the piece of metal has a weight of 200 Newton and is freely pivoted at A. The system is in equilibrium. By taking moment about A, calculate T. So again we are going to apply the principle of moment. The sum of clockwise moment is equal to sum of anti-clockwise moment. अब याद रखें, this is the line of action of force और पिवट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है. दिस इज एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच 8 मीटर. सो हमेशा आपने क्या करना है, फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करना है और पिवट से ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के राइट एंगल हो. दिस डिस्टेंस मस्ट बी कंसीडर्ड इन योर कैलकुलेशन. रिमेंबर, मोमेंट के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं. ओनली थिंग कि यू मस्ट नो कि कौन सा डिस्टेंस हमने कैलकुलेशन में यूज करना है. सो T मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 मीटर इज इक्वल टू दूसरी फोर्स कौन सी है 2000 न्यूटन और इसकी ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई और लाइन ऑफ एक्शन से पिवट तक का डिस्टेंस, इसका राइट एंगल डिस्टेंस कितना है, इट इज 2 मीटर. सो 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर. सो T कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास T कितना हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 8. Let me calculate this one. 2000 multiplied by 2 divided by 8. So answer is 500. So tension will be 500 और यूनिट क्या होगी न्यूटन. न्यूटन यूनिट का ख्याल करना आपने, सिग्निफिकेंट का फिगर का ख्याल करना आपने, यूनिट का ख्याल करना आपने आंसर देते हुए. The force T and the force that rope exert on the man are related by Newton's third law. State the relationship between these forces. So since they are pair of the Newton's third law, so हम इनको accordingly ही define करेंगे. So Newton law क्या, third law क्या कहता है हमसे कि to every action there is an equal but opposite reaction. In the same language we are going to answer this one. So दो forces कौन सी हैं, tension और force. So both forces
sorry, will be equal in size and opposite in direction. Just according to the third law, the both force must be equal in size and opposite in direction. Okay, look at this question. Figure 3.1 shows the firefighter of the total weight 840 Newton is in equilibrium. अगर equilibrium है तो sum of forces भी zero होगा और total moment भी zero होगा, यानी कि clockwise moment must be equal to anti-clockwise moment. Okay. The ladder leans towards a burning building at an angle such that the center of gravity C of the firefighter is 12 meter above the 5 meter to the right of P. Okay. The firefighter holds a hose that directs a high-speed jet of water horizontally into a burning building. Calculate the moment m of the firefighter weight above the P. तो फायर फाइटर के वेट का मोमेंट निकालना हमने. फायर फाइटर का वेट कितना है हमसे हमारे पास? वेट ऑफ द फायर फाइटर इज 840 न्यूटन एंड वी नो दैट द वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो ये हो जाएगी वेट की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. और वेट कितना है? 840 न्यूटन. और पिवटिंग पॉइंट से इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? दिस वन. और ये हमारे पास गिवन है कितना है? 5 मीटर. सो मोमेंट कितना हो जाएगा? 840 मल्टीप्लाई बाय 5. 840 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम. मोमेंट का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो 840 मल्टीप्लाई बाय 5. आंसर इज 4200. सो मोमेंट ऑफ द वेट कितना हो गया? 4200 न्यूटन मीटर. क्योंकि डिस्टेंस मीटर में था, फोर्स न्यूटन में थी, तो न्यूटन मीटर इज द आंसर. ओके. Jet water causes a horizontal force R on the firefighter that acts towards the left through C. This opposes the turning effect of his weight. Calculate the size of the R that on its own ensure that M is exactly cancelled. So force हमने निकालनी है रिएक्शन की R, और उसके लिए क्या करेंगे हम? अच्छा देखिए, जब फायर फाइटर यहाँ के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर फायर जेट, वाटर जेट अप्लाई करेगा तो एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगी एग्जैक्टली इन ऑपोजिट डायरेक्शन R. अब R का डिस्टेंस कितना होगा पिवटिंग पॉइंट से? यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज गिवन 12 मीटर. एंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. R मल्टीप्लाई बाय R का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर. सो R मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू, और ये डिस्टेंस कितना है? 42. मोमेंट कितना है? 4200. सो R कितना हो जाएगा? 4200 डिवाइड बाय 12. सो आंसर इज 350 न्यूटन. एक दफा और देख लें हमने क्या किया. क्लॉकवाइज मोमेंट वेट का क्रिएट हो रहा था हमारे पास, दैट वी जस्ट कैलकुलेटेड 4200 न्यूटन. Or this is being balanced by the reaction force. We have to find the reaction force R, which is here. So R का distance, perpendicular distance कितना है हमारे पास? ये that is 12 meter. So R multiplied by 12 must be equal to the clockwise moment. So हमने ये equation बनाई, R multiplied by 12 is equal to 4200 Newton. और 12 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. So force is 350 Newton. Suggest a third force that has turning effect about P on the ladder. एक और फोर्स है जिसका टर्निंग इफेक्ट तो है, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं की है. व्हाट कुड बी दिस पॉसिबल फोर्स? इट इज वेट ऑफ द लैडर इटसेल्फ. सो वेट ऑफ द लैडर यहाँ से एक्ट करेगा.
जो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं किया गया. सो द थर्ड फोर्स विल बी weight of the ladder. Okay, we are leaving this part because this part is from the chapter thermal physics. Okay, this question here. A crankshaft is a shaped metal bar that is part of a car engine. It is free to rotate about an axis as shown in the figure. So ये आपको axis नजर आ रहे हैं इसके, ये इसके point of rotation. When the crankshaft is horizontal, a vertical force of 8200 Newton acts downward on the crankshaft at P. So this is the force given, 8200 Newton, F, 8200 Newton, acting downward on P. This caused the crankshaft to rotate. The distance between P and the axis of the crankshaft is 0.050 meter. State what is meant by moment of a force. Again the same question and the same answer we have. It is the product of force and perpendicular distance between force and pivot. कोशिश करें कि जहाँ पे मार्क्स गिवन है इसके ऊपर बिल्कुल ना लिखें. दिस पॉइंट मस्ट बी विजिबल. द क्रैंकशाफ्ट इज हॉरिजॉन्टल. कैलकुलेट द मोमेंट एफ अबाउट द एक्सिस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट. तो मोमेंट निकालना है फोर्स का. अब यहाँ देखें इसका फोर्स कितनी है, 8200, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है P, विच इज़ हाउ मच, 0.05 मीटर. सो मोमेंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स है हमारे पास 8200, सॉरी 8200, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका कितना है, 0.050. लेट मी मल्टीप्लाई दिस. 8200 multiplied by 0.05, आंसर इज 410. सो मोमेंट कितना हो जाएगा, 410 न्यूटन मीटर. फोर्स न्यूटन में थी, डिस्टेंस मीटर में था, सो आंसर मस्ट बी इन न्यूटन मीटर. The size and the direction of the vertical force F act on the crankshaft at P remains constant. Explain why the moment of F decreases as the crankshaft rotate through a small angle. हमने ये बात डिस्कस की कि moment is the product of force and perpendicular distance between the force and pivot. अगर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर ना हो, यानी कि फोर्स और डिस्टेंस में राइट एंगल ना हो, तो मोमेंट चेंज हो जाएगा. याद रखें कि मैक्सिमम मोमेंट क्रिएट उस वक्त होता है जब फोर्स और डिस्टेंस राइट एंगल हो. अगर ये एंगल फोर्स और डिस्टेंस के बीच में 90 से ज़्यादा या 90 से कम, इन ईदर वे चेंज हो जाए, तो मोमेंट जो होगा वो कम हो जाएगा. सो एज यू कैन सी, जब ये क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी, लेट्स सपोज ये रोटेट करके इस एंगल पे आ गई, यहाँ पे आ गई, तो अब फोर्स और उसमें ये जो एंगल होगा ये 90 से कम हो जाएगा. जब ये एंगल कम हो जाएगा तो फिर मोमेंट भी चेंज हो जाएगा. ओके, सो इसका सिंपली हम आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज मोमेंट will reduce when angle is not a right angle.
सो जैसे जैसे ये एंगल कम होता जाएगा मोमेंट भी कम होता जाएगा, और जब एंगल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा यानी कि फोर्स और डिस्टेंस पैरेलल हो जाएंगे तो फिर टर्निंग इफेक्ट भी ज़ीरो हो जाता है. ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन. A builder needs to determine the density of a solid cube of wood. He placed a 50 centimeter mark of a uniform meter rule on a pivot so that the rule is balanced. He then places the cube on the rule with its center of gravity directly above the 75 centimeter mark. A mass of 0.05 kilogram move along the rule until the balance is restored. This is shown in figure 1.1. The rule is balanced when the 0.050 kilogram mass is at 10 centimeter mark. Calculate the mass of the cube. We have to find the mass of the cube. अगेन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे. अच्छा जी, अब देखिए यहाँ डिस्टेंस कितना है, ये 10, ये इट इज़ मार्क, इट इज़ नॉट डिस्टेंस, इट इज़ द पोजीशन 10 सेंटीमीटर, और पिवट कहाँ पे है 50 सेंटीमीटर. तो 50 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर. सिमिलरली 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 75 माइनस 50, 25 सेंटीमीटर. सो अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. लेट्स सपोज के क्यूब का मास लेट्स सपोज के m है. सो m मल्टीप्लाई बाय m का डिस्टेंस कितना है 25 इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 40. यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर दोनों तरफ एक यूनिट है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, नो नीड टू चेंज. सिमिलरली अब चूंकि हम यहाँ पे मास ले रहे हैं किलोग्राम में, तो दूसरी तरफ भी ऑटोमेटिकली आंसर हमारा किस में आएगा किलोग्राम में आएगा. सो m विल बी इक्वल टू simple calculation 0.05 multiplied by 40 divided by 25. So answer is 0.08 kilogram. That is the answer. That is mass of the cube. Okay, the cube has a volume of 1.6 times 10 to the power minus 4 meter cube. Determine the density of the wood. Density का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी, D for density is equal to mass over volume. What we have to find density, mass कितना हमारे पास, we just have found it out 0.08 और volume is given 1.6 times 10 to the power minus 4. Let me divide. 0.08 divided by 1.6 times 10 to the power minus 4, 500. और यूनिट क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास मास था किलोग्राम में और वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर में, तो इसलिए इसकी डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है डेंसिटी की. Okay, look at this question. State what is mean by moment of a force. We already have done this question. It is the product of mass, product of force, and the perpendicular distance between force and pivot. Okay, part B of this question. The anchor of a sailing ship has a mass 350 kilogram. 6 sailors raise the anchor from the seabed by turning a large axle. They push the handle attached to the axle and it rotates. The anchor is on the end of the chain that winds on the rotating axle. Okay, so as they are rotating, the axle is rising up. Each of the sailor exerts a force of 750 Newton on his handle at a distance 1.2 meter from the axis. So ये जो distance है 1.2 meter, that is the perpendicular distance between force and pivot, because each sailor is applying a force in this direction. And how much force they are applying? 750 Newton. Gravitational field strength is given 10 Newton per kg.
Calculate the total moment exerted on the axle by the sixth sailor. So what the formula for the moment is force multiplied by perpendicular distance. Force is 750 multiplied by distance is 1.2. Let me calculate. 750 multiplied by 1.2. Answer is 900. This is the moment created by one sailor because it is the force of one sailor. And how much sailor we have? 6 sailors. So 6 multiplied by 900. Answer is 5400 Newton meter. This is the total answer. Now, second part of the question, the gravitational potential energy gained by the anchor as the axle rotates through a one complete revolution. When the axle rotates through one complete revolution, the anchor covers a vertical distance of 160 centimeter. When we convert 160 centimeter into meter, 160 divided by 100, it will give you 1.6 meters. So we converted centimeter into meters. Formula for the gravitational potential energy is mgh. Mass of the anchor is how much? 350 kilogram. So 350. Value of G, they are taking 10. But since the syllabus has changed, so we are going to take the new value 9.8. And height is how much? 1.6. This is the height. Do multiply. 350 multiply by 9.8 and multiply by 1.6. Answer is 5,488. 5,488. We have to round it off to two significant figures. So answer would be 5,500. Rounding off to two significant figure. And since it is energy, so unit will be joules. J for joules. The work done on the axle by the sailor is very much larger than the gravitational potential energy gained by the anchor. State and explain how the energy is wasted. So there are multiple ways of wasting the energy. Number one, friction, and that is the number one reason of wasting of energy. Between axle and what else is that? And axis of rotation causes heat loss. Part of the work wasted against friction. Better to write working against friction. Must read the question.
The two things are there, state and explain. You have to tell what is the reason and why this reason is valid for this. Explain why the power produced by the sailor is larger when the anchor is lifted at faster rate. Since power is work divided by time, so work done in less time produce more power. Describe with the aid of a level diagram how to verify the principle of moment. So we just had discussed in the moment last class what you have to do. I'm just explaining you briefly that you have to draw a meter rule here, a meter rule pivoted at the middle, position at 50 centimeter. Now hang the loads on either side. Here F1, one more here, F2, here F3, and balance this one by F4. Mark the distance of each. This distance D1, D2, D3 and D4. What you have to do, place the 4 weights, 2 on the left side and 2 on the right side, and change their position until the whole system is balanced. Once the whole system is balanced, measure the total clockwise moment by using this F1 into D1 plus F2 into D2, and then measure the total anti-clockwise moment by using F3 into D3 plus F4 into D4. If the total moment of clockwise is equal to the total anti-clockwise moment, if the both answer are same, it means you have verified the principle of moment. This is what you have to explain for 4 marks. Diagram is very much important. Please memorize this diagram at least one. You cannot draw a diagram by only looking at until you practice at least once. Diagram can be memorized only and only by practicing. There is no other ways to memorize the diagram. Must understand the diagram and draw it. Okay, so you will earn the maximum marks if you only draw the diagram correctly. The rest is you only have to write a few things only. Okay, so we are finishing this class. In the next class, we will be starting the new chapter. Take care.